मार्केट्स एंड स्टॉक प्राइसेस आर स्लेव्स ऑफ अर्निंग्स। आप शॉर्ट टर्म में जो भी देखते हैं सुनते हैं वो नॉइजेस होती हैं, उनका इम्पैक्ट नहीं होता है। या तो आप उसका इम्पैक्ट अर्निंग्स पे लॉन्ग टर्म में है तो यस इम्पैक्ट होता है। जैसे कि हम बात कर रहे हैं अभी टैरिफ्स की, ट्रम्प टेंट्रम्स की, तो अगर ये सस्टेन्ड बेसिस पे टैरिफ्स हायर रहते हैं इंडिया में तो कुछ एक सेक्टर्स हैं जिन पे इनका इम्पैक्ट नेगेटिव रहेगा। जब तक कि वो ऑल्टरनेटिव मार्केट्स नहीं ढूंढते, ऑल्टरनेटिव स्ट्रैटेजीज नहीं ढूंढते हैं, बिजनेसेस नहीं ढूंढते हैं, तब तक उन पे नेगेटिव रहेगा। तो ये अर्निंग्स पे है। आपको जो भी नॉइस मार्केट में चल रही है, रीसेंट इवेंट चल रही है, आपको ये देखना है कि इसका इम्पैक्ट मेरे पोर्टफोलियो वाले स्टॉक्स पर या स्कीम्स पर, अर्निंग्स पर क्या इम्पैक्ट रहेगा। बाकी सब नॉइसेस है, बाकी सबसे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, अर्निंग्स ग्रोथ है, कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, लेकिन क्या वो इस प्राइस पे मिल रही है कि वो रीजनेबल है या नहीं है। हर एक अच्छी चीज का भी एक प्राइस होता है। आप एक पर्टिकुलर प्राइस तक उसको लेने के लिए तैयार रहते हैं, उसके बाद वो आपके लिए सेंस नहीं बनती है। तो इसमें होता है रिस्क रिवॉर्ड इज इन योर फेवर और नॉट। अगर कोई चीज बहुत महंगी मिल रही है, चाहे वो कितनी ही अच्छी अर्निंग्स क्यों ना कर रहे हो, तो भी एक अवॉइडेबल होती है। तो दो ही क्राइटेरिया है, पहला अर्निंग्स, दूसरा वैल्यूएशन। मार्केट में वैल्यूएशन, अगर कोई भी स्टॉक आपको या कोई ऐसे इन्वेस्टमेंट्स हैं जिनमें आपका प्राइस अर्निंग मल्टीपल एब्नॉक्शियस है, हायर है, और उसका अर्निंग ग्रोथ ठीक है, फिर भी आपको वो अवॉइड करनी चाहिए। तो मार्केट्स में मेरा ये कहना है कि अगर आप एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाएंगे ना, और आप लगातार इन्वेस्ट कर रहे हैं उस पोर्टफोलियो में, तो आपको पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइज करना पड़ सकता है मार्केट कंडीशन के बेसिस पे, बट बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट चेंजेस नहीं करने पड़ते। अगर आप एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाते हैं, मान लीजिए आज की डेट पे अगर आपका 5% कैपिटल इन्वेस्टेड है टेक्सटाइल स्टॉक्स में, और उस टैरिफ की वजह से उस पर्टिकुलर सेक्टर को बहुत नेगेटिव फैक्टर हुआ है, ठीक है, आपको उस समय उतना करेक्शन करना पड़ेगा कि आप उन स्टॉक से एग्जिट कीजिए, और जो स्टॉक्स अभी आने वाले समय में अच्छा परफॉर्म करेंगे वहां चेंज कर लीजिए। इतना ही ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत होती है, ज्यादा ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत नहीं होती। एक अच्छे एडवाइजर के साथ काम करेंगे, वो आपको हमेशा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो देगा। इसीलिए मैंने कुछ समय पहले बोला, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मार्केट्स में मेरा लर्निंग है पिछले 25 साल का, वो ये है कि आप अपनी एसेट एलोकेशन पे काम करते हैं या नहीं करते हैं, आप अपनी एसेट एलोकेशन को टाइमली रीबैलेंस करते हैं या नहीं करते हैं। ये टाइमिंग इन द मार्केट ना, इसका कोई मतलब नहीं। Stock market is a slave of earnings, that's it. I mean, over a long period of time there will be many events which will occur, but it is fundamentally a discounted cash flow of future earnings, and you're making that calculation. So a good business which will stand the test of time and run over 10, 20, 30 years will give you phenomenal returns. And equally, a bad business which is more focused on, an event or a gray area, hypothetically in regulations, or, वो जुगाड़ के लिए बना है in Indian language, you have to challenge it, and chances are there will be a higher failure rate in those kind of businesses. What people also need to realize is India is one of the few large global markets. There are very few, I would perhaps say there may be only 5 global markets which can qualify in this bucket. So which are these markets? US, China, Germany and Japan, and now India, where you basically have so many industries, so many sectors to play around in. Look, I'm not even naming countries like Russia and Brazil. Why? Because those are more dependent on energy, stroke, everything. In India today, the underlying index has 22 sectors. That's large. 22 सेक्टर है, आपका सबसे हाईएस्ट परसेंटेज
maybe 30+% financial services, then IT, then manufacturing, chemicals, FMCG. आपके पास इतने सारे options है, which then gives fund managers an option to play around and generate that alpha for you. It becomes very difficult in a market where hypothetically 70% is only dependent on, minerals or oil or this thing, because then it will basically behave in that direction. So from a macro perspective, I think these 5 markets, if you play it smartly, you will make your meaningful returns with a good fund manager. In most of the other places, it's more a cyclical macro call that they don't have adequate size. So I think the good thing about India is in the last 4-5 years, it has matured dramatically in terms of number of new issuances, number of new companies coming in, market depth increasing. Long way to go, but I think it's a very different situation from where it was, say, 5 years back. So, look, remain focused on earnings.